number 1D in the list of business today. Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice. Shriman Birjlal ji. Thank you, Chairman, sir. With your permission, I rise to present a copy each in English and Hindi of the following report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice. Number 1. Under 6-year report on demand for grant 2026-27 of the Department of Personnel and Training. Number 2. Under 61st report on demand for grants 2026-27 of the Department of Administrative Reforms and Public Grievances and Pension and Pensioners Welfare. Third, under 62nd report on demand for grants 2026-27 of the Department of Justice. Fourth, under 63rd report on demand for grants 2026-27 of the Legislative Department. And fifth, under 64th report on demand for grants 2026-27 of the Department of Legal Affairs. Thank you, sir. Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Communications and Information Technology. Srimati Priyanka Chaturvedi ji. I wish to lay the 23rd and 24th reports, Hindi and English versions, of the Standing Committee on Communications and Information Technology as listed against my name. Thank you, sir. Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution. Srimati Sumitra Palmik ji. माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज अपने कार्यसूची में मेरे नाम के आगे क्रमांक 4 पर यथावत सूची उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी समिति के 13वें और 14वें प्रतिवेदनों की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखती हूँ। Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing. Dr. Anil Sukhdev Rao Bonde ji. धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपके अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या पुरवणी के पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति 2025-26 के 27वें, 28वें, 29वें, 30वें, 31वें, 32वें प्रतिवेदनों हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। Only 1 minute. Statement by Minister Shriman Suresh Gopi ji. Honorable Chairman, with your kind permission, I rise to make a statement mentioned against my name at serial number 5 in today's list of business regarding status of implementation of observations, recommendations contained in the 357th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on development of niche tourism, including spiritual tourism, theme-based tourism, tourist circuits, and potential tourist spots pertaining to the Ministry of Tourism. Thank you. Honorable members, during the meeting of the Business Advisory Committee held on 11th March 2026, certain honorable members had suggested that in view of the commencement of several auspicious festivals such as Navaratri, Gudi Parva, Ramadan, etc. from the 19th March onwards, it would be appropriate if the sittings of the Council scheduled for 19th and 20th March 2026 were not held. I wish to inform the honourable members that the request made in this regard has been considered favourably by the government. Accordingly, the sittings of the Council scheduled for Thursday, the 19th March 2026 and Friday, the 20th March 2026 stands cancelled. However, in order to make up for the time so lost, the Council will instead sit on Saturday,
the 28th March 2026 and Sunday, the 29th March 2026. Honorable members may kindly take note of the same. Sir. To disrupt 0 hour, not at all, nor give a 267, You come to sir. the point. 30 seconds, sir, because we don't want to disrupt. Sir, in the dead of night, the chief secretary, the principal secretary, the home secretary have been removed by the election commission, sir. They have all the power. They have all the power to do it. Sir, they have all the power to do it. They can also say, I'm wearing a blue shirt and not a white shirt. No disturbing the house. In protest against what the chief election commissioner is doing, we, my party, the All India Trinamool Congress, is walking out for the day. You want to respond to them? You want to respond? Yes. Honorable The Minister. honourable member has suddenly stood up without his issue being listed. He is raising the matter about a constitutional authority which this house or the government has nothing to do with. Now, if every member wants to raise a question on the decision of a constitutional authority like the courts and the election commission, then it is not wise. चुनाव आयोग का पावर हड़प नहीं सकता है। चुनाव आयोग का पावर वो अलग है, संविधान ने उसको पावर दिया गया है, उसको सदन में रेज करके कोई मतलब नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि संवैधानिक संस्थाओं का इज्जत करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी हमेशा संवैधानिक संस्थाओं को हमला करने का यह आदत बनाया हुआ है, ये ठीक नहीं है और ये सदन का समय को भी दुरुपयोग किया है। Now, matters raised with permission, Srimati Ranjit Ranjan ji. सभापति महोदय, मैं आपके इस सदन का ध्यान एक बेहद गंभीर और शर्मसार करने वाली समस्या की ओर दिलाना चाहती हूँ। हमारे देश के स्कूलों में छात्राओं के लिए बुनियादी सुविधाओं की आज भी भारी कमी है। यह सिर्फ सुविधा का मुद्दा नहीं है, ये हमारी बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान का सवाल है। आज देश में बार बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दिए जाते हैं। सरकारी मंचों से बेटियों की बात करते हैं, उनके भविष्य की बात करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि कई स्कूलों में आज भी बेटियों के लिए एक साधारण सा शौचालय भी उपलब्ध नहीं है। हाल ही में एक समाचार के अनुसार छत्तीसगढ़ में 5000 से अधिक सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय नहीं है। इस स्थिति को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी शर्मनाक बताते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। और यह समस्या केवल एक राज्य की नहीं है। हमारे देश में स्वच्छता सुविधाओं और मासिक धन प्रबंधन की कमी के कारण हर साल लगभग 2.3 करोड़ लड़कियां स्कूल छोड़ने को मजबूर होती है। कई स्कूलों में ना तो साफ पानी है, ना साबुन है, ना ही सैनिटरी नैपकिन के सुरक्षित निपटान की व्यवस्था है। ऐसी स्थितियों में लड़कियों को पढ़ाई जारी रखने में बेहद कठिनाई होती है। कुछ राज्यों की स्थिति तो और भी चिंताजनक है। बिहार में केवल 23% स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय है, जबकि उत्तर प्रदेश में मात्र 29% स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालय है। वर्ष 2024-25 के सर्वेक्षण के अनुसार देश में लगभग 14.72 लाख स्कूल है, लेकिन बड़ी संख्या में विद्यालयों में छात्राओं के लिए पर्याप्त स्वच्छता और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर में 1321 सरकारी स्कूलों में शौचालय नहीं है। उत्तराखंड में 141 विद्यालयों में छात्राओं के लिए शौचालय नहीं है। राजस्थान में 14,000 से अधिक स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय नहीं है। मध्य प्रदेश में 14,072 स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालय नहीं है और लगभग हमारे देश में 10,000 स्कूल शौचालय विहीन है। इसके अतिरिक्त यूनिसेफ के अनुसार भारत में लगभग 22% स्कूलों में छात्राओं के लिए उपयुक्त शौचालयों की उपलब्धता नहीं है। सभापति महोदय, यह गंभीर सवाल खड़ा करता है कि क्या हम सिर्फ नारों से बेटियों को सशक्त बना रहे हैं? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल भाषणों और विज्ञापनों तक ही सीमित है?
मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि देश भर के स्कूलों में स्वच्छता सुविधाओं का तत्काल राष्ट्रीय सर्वेक्षण कराया जाए। हर स्कूल में छात्राओं के लिए अलग सुरक्षित और कार्यशील शौचालय सुनिश्चित किए जाए। साफ पानी, साबुन और मासिक धर्म स्वच्छता से जुड़ी सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। अगर हमें सच में अपनी बेटियों को सशक्त बनाना है तो केवल नारे नहीं ನಾನು ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏಮ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಘನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಾನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಾಗಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗಾಗಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರುವುದು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಾಗಿ. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಳ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ ಸಹಿತ ಅನೇಕ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ದೊರೆಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕವು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ 250 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಮರೆತು ಹೋದಂತಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಆರೋಗ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉಪಾಯಗಳಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ತೀರ ಬಡತನ, ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕೊರತೆ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಅವು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಬಡ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ಖರ್ಚನ್ನು ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೈದರಾಬಾದಕ್ಕಾಗಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371J ಪ್ರಕಾರ ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಶತ 70ರಷ್ಟು ಜನರು ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಸೀಟು ಸಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕೊರತೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 48% ಅಷ್ಟು ಜನರು ಮಹಿಳೆಯರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಪುರುಷರು ಕೇವಲ 60% ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ನಮ್ಮ ಘನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಇನ್ನೊಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಪ ಕೇಳು ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದಯ ಮಾಡು ಸಣ್ಣವನು ಕೇವಲ. ಅದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದರೂ ಅವರ ನಮ್ಮ ಅರಿಕೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯೇ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸವಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ ಕೊರತೆಯು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ, ತುಂಗಭದ್ರೆ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಇದೆ, ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲ ಇದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಘನ ಸರ್ಕಾರವು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಸರಿ ಕೇರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ